हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संदीप चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं आर्टिस्ट संदीप चक्रवर्ती और आज है हम माइकल जैक्सन ट्यूटोरियल पार्ट 9। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूं डॉम्स की ब्लैक कलर और इसके साथ ही साथ मैं माइकल जैक्सन की रेफरेंस पिक को फॉलो करते हुए जहाँ पे थोड़ी ब्लैक शेडोज चाहिए उस जगह को कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं उनके हाथ पे जो माइक है उसको कंप्लीट करूँगा और उनके फिंगर्स को भी कलर करूँगा। सो दोस्तों, मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से उस जगह को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जो फिंगर्स थे। उस फिंगर को कलर करने के लिए मैं बेसिकली पेल ऑरेंज का यूज़ किया हूँ। इस जगह पे पूरा पेल ऑरेंज से किया। उसके बाद थोड़ा सा शेडोज़ के लिए बार्न टोकर का भी यूज़ किया और डिटेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ कर रहा हूँ रेफरेंस पिक को फॉलो करते हुए। मैं इसके बाद थोड़ी ब्लैक कलर का भी यूज़ करूँगा उस जगह पे, क्योंकि रेफरेंस पिक पे देखो थोड़ी थोड़ी ब्लैक शेडोज़ भी है। इसके लिए मैं डॉम्स की ब्लैक कलर यूज़ करूँगा।
सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स की ब्लैक कलर, और रेफरेंस पिक पे आप देख सकते हो जो माइक और फिंगर है उस जगह पे थोड़ी सी ब्लैक कलर है, तो इसके लिए हम पूरा ब्लैक से उस जगह को भर देंगे। और मैंने माइक के लिए यूज़ किया है डोम्स की ग्रे कलर, और थोड़ी सी ब्लैक भी यूज़ किया है, और पेपर कसल बाई कलर की ग्रे कलर भी यूज़ किया है।
मैं यूज़ कर रहा हूँ पेल ऑरेंज, और इसके बाद मैं पिंक यूज़ करूँगा और ब्लैक का भी यूज़ करूँगा शेडोज़ के लिए। जो फेस और नेक के बीच का जो शेडोज़ है, उस शेडोज़ को दिखाने के लिए मैं पिंक का यूज़ करूँगा, डॉम्स की पिंक का। और शेडोज़ के लिए मैं पहले फेबर कैसल बाई कलर की जो ग्रे कलर है उससे मैं पहले पूरा ग्रे कलर कर दूंगा उस जगह को। उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक यूज़ करूंगा और थोड़ी सी पिंक का भी यूज़ करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे मेरे हर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे, माइकल जैक्सन ट्यूटोरियल पार्ट 10 पे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर गिव अप। बाय।
फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट पे ज़रूर बताना, लाइक शेयर भी करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे मेरे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेवर गिव अप।